commandos are nearing the end of their weapons training class. The irony of it is that right after their weapons class, one of the commandos breaks one of the most important rules of being a soldier. Never leave your weapon behind. And all the commandos are made to pay for one man's error. बेसिकली नींद में थे सब, तो किसी ने अपना वेपन कहीं पे रख दिया और दूसरी क्लास के लिए वो भाग के जाना है। भाग के वहाँ पे पहुँचे तो उनको पता लगा कि वेपन तो छोड़ आए हैं अपना। In the eyes of the instructors, the crime is severe. Strength of any team is decided by its weakest link. The weakest link is the one जिससे ये सारी mistakes हों. And for this, there can only be one punishment at commando school. The dreaded Kuni Nala. Yeah, this is one dreaded Nala. If you would even go close to it, you can smell the unwanted odor, which you would not like to even smell. कुनी नाले का नाम सुनते तो नींद उड़ जाती है। It is very smelly. आप कपड़े धोने के लिए देते हैं तो एक हफ्ते तक उसमें से स्मेल नहीं जाती है। पत्थर वत्थर कीड़े मकोड़े सब कुछ चलते हैं वहाँ पे। One commando's error is now everyone's nightmare, and there is a purpose behind this. In commando operations, an error by one can mean death for all. So for the instructor, the sole purpose of this punishment is to ensure that no commando ever forgets his weapon, and that none of his men ever do. Nothing better than the gut-wrenching file and butyrate smells and tastes of the Kuni Nala, making sure nobody repeats such a mistake. 3:30 p.m. The sun finally starts to set on day 4. But the next 31 days are going to be far more excruciating. The tests get tougher, the stakes get higher. Teamwork and military precision will define who makes it in the end. So how do they ready themselves for the storm that lies ahead? सबसे पहला जो उसका I would say गलत फहमी जो है उसके दिमाग में कि मुझे 6 घंटे की नींद चाहिए, सबसे पहले हम उसको वो दूर करते हैं। मिथ है उसके दिमाग में जो अभी तक बना हुआ है, ये मिथ तोड़ते हैं। Every night, for the first 2 weeks at commando school, the commandos live in an extreme state of uncertainty. The only thing that they're certain of is that they're going to get no sleep, but the form of physical pain coming their way is a mystery. ये पीटी हमारी इनिशियली 4 बजे से शुरू होती है जब कोर्स का स्टार्टिंग होता है, और जैसे जैसे कोर्स का पेस बढ़ता रहता है, ये पीटी सुबह के 2:30 बजे, फिर 2 बजे, फिर 1:30 पे ये पीटी चालू हो जाती है। तो 1:30 पे कमांडोज अगर पीटी कर रहे हैं 1:30 टू 6 o'clock, इट इज़ ऑब्वियसली ब्रेकिंग दैट साइकिल। नियर अबाउट 2 हफ्ते हम लोग लेते हैं उसके फिजिकल फिटनेस बिल्डअप करने के लिए, और जो फिजिकल फिटनेस का जो ग्राफ है वो बहुत ही स्टीप है। वो 2 हफ्ते में हम लोग बिल्कुल उसको एक्सट्रीम में ले जाते हैं। Touch your nose to your knees. And you hold it there at least for 30 seconds. Don't try, don't get up. Try to touch. तो पूरी बायोलॉजिकल साइकिल हमने उसकी पूरी ब्रेक कर दी। जब उसको सोना चाहिए था वो कहीं पे दौड़ रहा है, और जब दिन में प्रोबेबली जहाँ पे उसको जगना चाहिए था वहाँ पे उसको क्लासेस करा रहे हैं जहाँ पे वो सो रहा है। ब्रेकफास्ट टाइमिंग 4 बजे या 3 बजे एक्चुअली कोई ब्रेकफास्ट नहीं होता, बट यहाँ पे हम लोग फोर्स करते हैं कि ठीक है तो ओके 3 बजे आपका ब्रेकफास्ट है, या फिर डिनर आपका 12 बजे, रात के 12 बजे, मिडनाइट में। Over the first 2 weeks of commando school, the instructors make nights melt into each other. The main focus is on extreme sleep deprivation,
so that these young soldiers can advance to the next stage of becoming lethal commandos. The dizzying first 2 weeks of commando school come to an end. Breaking down their body clocks has left the commandos with a fuzzy brain, blurry vision, and a complete sense of disorientation. But according to the instructors, this is the best time to test their skills in the field. कहीं पे मैंने पढ़ा था कि you will not know कि how strong you are until and unless being strong is the only option left for you. We create a similar kind of situation over here.